नमस्कार। आर मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। एखन हम सब देख रहे वीडियो के अंतर्गत काव्य शास्त्रक महत्वपूर्ण अध्याय छंद। छंद में इससे पूर्व हम सब दूटा वर्णिक छंद के देख चुकल छी। छंद के मुख्य तीनटा भेद है, वर्णिक, मात्रिक आ मुक्तक छंद। जे वर्ण पर वर्णगणना के आधार पर रहैत अछि तकरा वर्णिक छंद कहल जाइत अछि। जे छंद जकरा जे छंद में मात्रा के गिनल जाइत अछि, मात्रा के गणना के आधार पर रहैत अछि तकरा मात्रिक कहल जाइत अछि। जे ओहि बंधन से मुक्त रहैत अछि, छंदक बंधन से मुक्त में रचना कयल जाइत अछि तकरा मुक्तक कहल जाइत अछि। छंद के तीनटा मुख्य भेद अछि। एहिमे हम सब वर्णिक छंद के चर्चा कर चुकल छी। एहिमे दूटा वर्णिक छंदक भेदक सेहो चर्चा केलहुँ। आइ हम सब वर्णिक छंदक तेसर भेद अछि शिखरणी छंद। एकर भेद पर चर्चा करब की लक्षण अछि, परिभाषा आ शिखरणी छंदक चिन्हक की प्रयोजन अछि, केना चिन्हबै जे शिखरणी छंद के पद सब रचना अछि। यदि अपने आर एस मैथिली चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी तो सब्सक्राइब कर ली। एखन बीच में वीडियो नहीं बन रहा है, तबियत अस्वस्थता के कारण फिर स्वस्थ भेला के बाद कंटिन्यू वीडियो पर बनत। तो हम तब तक बीच में कोनो वीडियो लाबै छी, आगा बढ़ा रहल छी के सब सिलेबस के। तो हम सब देखब आइ वर्णिक छंदक तेसर भेद अछि शिखरणी छंद। शिखरणी छंद जे अछि की अछि, वर्णिक छंद के भेद सेहो पूछल जाइत अछि नेट परीक्षा में। जे शिखरणी की अछि तो बुझल रहत जे वर्णिक छंद अछि। वर्णिक छंदक एकटा भेद अछि तब मारि सकै छी एहिमे टिक, नहीं तो ऑप्शन में अलंकार देल रहत, काव्यक प्रयोजन देल रहत, छंद देल रहत, काव्यक लक्षण देल रहत, गलत भऽ सकैत अछि। याद राखब जे शिखरणी वर्णिक छंदक भेद अछि। शिखरणी छंदक लेल कुल 17 वर्णक प्रयोग कयल जाइत अछि। शिखरणी छंदक जे रचना रहैत अछि, एहि छंदक रचना कुल 17 वर्ण में कयल जाइत अछि। वर्ण के चरण के पहले चर्चा कर चुकल छी। प्रत्येक छंद में 4टा चरण होइत अछि। प्रत्येक चरण में कुल 17टा वर्णक प्रयोग शिखरणी छंद में कयल जाइत अछि। अगला पॉइंट अछि यति। छठम आ 11हम वर्णक बाद यतिक प्रयोग कयल जाइत अछि। शिखरणी छंद में जेना 17 गो टोटल एकटा चरण में 17 गो वर्ण प्रयोग होइत अछि, जाहिमे 17 गो वर्ण के बाँटल जाइत अछि। जे 11 पहले 6 में 6 वर्ण के बाद यतिक प्रयोग रहैत अछि। एक बाद फिर 11टा और वर्ण लिखल जाइत अछि। एहि तरह में यतिक प्रयोग रहैत अछि 6 आ 11 वर्णक बाद। शिखरणी छंदक गण विन्यास देखब। गण विन्यास भऽ जाइत अछि यगन, मगन, नगन, सगन, भगन और एकटा लघु, एकटा गुरु। एक शॉर्टकट में याद रखबाक लेल हम एहिठाम टिक पर बैठौने छी यमन सब लग। यमन सब लग, यमन से य से तात्पर्य भऽ गेल यगन, जकरा कि एहिठाम यगन म से भऽ गेल मगन और न से भऽ गेल नगन। तो यमन के भऽ गेल
य म न यमन। सब लग सब स से भऽ गेल सगन, भ से भगन, आ ल आ ग से भऽ गेल पहले, ल से भऽ गेल लघु, आ ग से गुरु। एहि तरह एहिमे गण विन्यास रहैत अछि, क्रमशः रहैत अछि या एहिना। जँ कोनोमे गण विन्यास उल्टा पुल्टा हैत तऽ ओहि छन्दक लक्षण आओत, ओहि छन्दक ओ लक्षण नहि मानल जायत। तऽ गण विन्यास सेहो नीट परीक्षामे एहि बेर पूछल गेल छल आ पूछलो जाइत अछि। शिखरनी छन्दक गण विन्यास भऽ जाइत अछि यगन, मगन, नगन, सगन, भगन, एकटा लघु, एकटा गुरु, जेके शॉर्टकटमे याद राखि सकै छी यमन सब लग, यमन सब लग। ओहिसे शॉर्टकटमे एना याद रखलासँ की हैत, जेकि क्रमबद्धता जे छै क्रमशः से उल्टा नहि हैत, ध्यानपर रहत। तऽ यमनमे यगन से तात्पर्य होइत अछि, जकर हमसब यगनमे होइत अछि एकटा लघु आ दूटा गुरु। यगनमे हमसब गण विन्यासमे देखने छियै 8टा गण विन्यास होइत अछि छन्दमे। ताहिमे यगनके लेल भऽ जाइत अछि एकटा लघु आ दूटा गुरु। मगनके लेल तीनू के तीनू गुरुके प्रयोग कयल जाइत अछि। नगनके लेल तीनू के तीनू लघुके प्रयोग कयल जाइत अछि। सगनके लेल दूटा लघु आ एकटा गुरु। फिर भगनके लेल पहिल गुरु, दूटा, ताहिके बाद लघु। तऽ भऽ गेल एहिना 5 तिया 15, आ एहिमे कुल 17टा वर्णके प्रयोग होइत अछि। तऽ एकटा लघु आ एकटा गुरु। तऽ शिखरनी छन्दक प्रत्येक चरणमे जे चारू चरण रहैत अछि, चारू चरणमे एहि प्रकारे गण विन्यास क्रमबद्ध रूपमे लिखल रहैत अछि। रहत यगनके लेल लघु गुरु गुरु, मगन गुरु गुरु गुरु, नगन लघु लघु लघु, सगन लघु लघु गुरु, भगन गुरु लघु लघु। ताहिके बाद अलग से दूटा रहत, ताहिमे एकटा लघु आ एकटा गुरु। ई भऽ गेल शिखरनी छन्दक गण विन्यास। उदाहरणमे हमसब देखब, इहोके 4 गो चरणमे उदाहरण लिखल गेल अछि, आ अहिना जहिना एहिमे कहलहुँ तहिना क्रमशः बैठाओल जाइत अछि शिखरनी छन्दके लेल। यमन सब लग, य म न स भ सब ल आ ग, एहिना क्रमशः रहैत अछि। यमनमे 3टा भऽ गेल, पहिल भऽ गेल यगन। तऽ यगनके लेल छल जेना, ताहिमे पहिले पढ़ै छी पदके। प्रभा शून्या शाला स्वजन पलट मोद बिकला। एहिमे हमसब शब्दके अनुसार, मात्राके अनुसार लघु गुरुके बैठायब। पहिले छै प्रभा, प्र में आकारके उच्चारण नहि सीधे प र संयुक्त अछि, तऽ भऽ जाइत अछि लघु, ओ भऽ गेल लघु। भा में आकारके उच्चारण आबि जाइत अछि, तऽ भऽ जाइत अछि गुरु। स तालब स अछि, ताहिमे दुर्घुके प्रयोग कयल गेल अछि, तऽ दुर्घु जे अछि दीर्घ वर्ण अछि, तऽ ओ भऽ गेल गुरु। नय संयुक्तमे आकार अछि, तऽ ओ भऽ गेल गुरु। शाला साकार अछि तऽ गुरु, लकार अछि तऽ गुरु। एहिना स्वजन, स्वमे अ के उच्चारण अछि मात्र, आ के मात्रा नहि अछि, तऽ भऽ गेल लघु। जनमे ज अछि, ओहिमे आ के उच्चारण नहि अछि, तऽ लघु। न में न भऽ गेल इहो लघु। पलट प ल ई दुनू भऽ जाइत अछि लघु, आ पट के भऽ गेल लघु। आ ल में दीर्घिकार अछि, तऽ दीर्घ ई की अछि गुरु वर्ण मानल जाइत अछि, तऽ गुरु। ओकार
ओकार अछि गुरु वर्ण, तो एहिके लेल गुरु। दीर्घ वर्ण भऽ गेल तऽ गुरु। द भऽ गेल, आबि जाइत अछि ओम के उच्चारणमे, तऽ ओहिमे हर्ष स्वर छल, लघु स्वर, तऽ ओहिके लेल लघु। हर्षिकार, तऽ हर्षिकार लघु मानल जाइत अछि, लघु वर्ण भऽ गेल तऽ लघु। क औक अछि तऽ लघु। ला आकार, आकार जे आबि जाइत अछि गुरु भऽ जाइत अछि। एहि तरहे क्रमशः एहिना सबमे गुरु लघु भऽ गेल स के लेल, ख दीर्घिकार के लेल भऽ जाइत अछि गुरु। फिर श्र में एकार अछि तऽ गुरु, आ न में नी में दीर्घी अछि तऽ गुरु। फिर चिंता, चिंता में देखियौ न तऽ संयुक्त वला अछि, तऽ संयुक्त शब्दसँ जस्ट पहिले जे प्रयोग कयल जाइत अछि तऽ ओ लघु रहितो गुरु भऽ जाइत अछि। तऽ च हर्षिकार अछि लेकिन ओहिठाम गुरु लघु अछि, लेकिन ओहिके लेल गुरु वर्ण प्रयोग कयल गेल अछि ओहिठाम मात्रा। कारण कि न अतः संयुक्त वर्ण अछि, संयुक्त वर्णसँ जस्ट पहिले यदि लघु शब्द प्रयोग कयल जाइत अछि तऽ एहिके मात्रा जे अछि गुरु बैठाओल जाइत अछि। तैँ एहिठाम चहर्षियो कालके लेल, हर्षियोके लेल गुरु बैठाओल गेल अछि। आकार, तऽ एहिमे न तऽ संयुक्तमे आकार छै तऽ ओ गुरु भऽ गेल। न मित, तऽ न में अ के उच्चारण अछि तऽ लघु। मी में हर्षिकार छै एहिठाम, तऽ देखो हर्षिकारके लेल लघु होइ छै तऽ लघु। त के लेल लघु। महर्षुकार, हर्षु अछि तऽ लघु, आ दीर्घ रहैत तऽ गुरु भऽ जायत। ख के लेल अ के उच्चारण आबि रहल अछि तऽ ओ भऽ गेल लघु। निष्कौतुक कला, न हर्षिकार अछि तऽ एहिके लेल लघु हेबाक चाही, लेकिन ओहिठाम स के संयुक्त अछि तऽ संयुक्त शब्दसँ पूर्व जे शब्द प्रयोग होइत अछि ओ लघु रहितो ई गुरु भऽ जायत। न हर्षिकार लघु छल, लघु प्रयोग होबाक चाही मात्रा, लेकिन एहिठाम गुरु के शब्दके प्रयोग कयल, गुरु संकेतके प्रयोग कयल गेल अछि। कारण स क संयुक्त वर्णसँ पहिले प्रयोग कयल गेल अछि। संयुक्त वर्णसँ पूर्वक कोनो वर्ण रहैत अछि जे अगर लघुओ रहैत अछि तऽ एहिके गुरुके रूपमे मानल जाइत अछि, उच्चारणमे ओ गुरु भऽ जाइत अछि। तऽ औकार अछि तऽ ओ तऽ गुरु ऑटोमेटिक अछि। तऽ हर्षुकार अछि तऽ हर्षुके लेल लघु। क के लेल लघु। ल भऽ गेल लघु, क भऽ गेल लघु, आ ला आकार अछि, आकार गुरु। देखियौ जहिना ओहि चरणमे छल क्रमशः गण विन्यास, तहिना इहोमे अछि। तऽ शिखरनी छन्दक भऽ जाइत अछि गण विन्यास। यगन, मगन, नगन, तऽ यमन, सगन, भगन, एकटा लघु एकटा गुरु, तऽ एकटा लघु एकटा गुरु, इहोमे एकटा लघु एकटा गुरु, इहोमे एकटा लघु एकटा गुरु। तऽ एहि तरह सब चरणमे अहिना क्रमबद्ध गण विन्यास कयल गेल अछि। तऽ भऽ गेल शिखरनी छन्दक लक्षण। एहिके बाद हमसब देखब माता पिता सोचे तत् हृदय खिन्ना सहचारी, इहोमे अहिना अछि। एहिके बाद अगिला देखब हमसब तऽ ई चारू चरणमे एके रङ्गके अहिना जहिना गण विन्यास छै तहिना हैत। तऽ शिखरनी छन्दक देखलहुँ हमसब यमन, सबलग, गण विन्यास, 17टा वर्णक प्रयोग ओहिमे शिखरनी छन्दमे भए गेल। आगाँ देखब अगिला छन्द अछि मादक्रांता। मंदक्रांता छन्द अछि, इहो एकटा वर्णिक छन्द अछि। की अछि तऽ वर्णिक छन्द। मादक्रांता छन्द पुरि जेतै कोन छन्द अछि तऽ वर्णिक छन्द भऽ गेल मादक्रांता छन्द, वर्णिक छन्द। इहोमे कुल 17टा वर्णक प्रयोग कयल जाइत अछि। मादक्रांतो छन्दमे 17टा वर्णके प्रयोग कयल जाइत अछि। एहिमे 10म आ 7म वर्ण पर यतिक प्रयोग कयल जाइत अछि। शिखरनी छन्दमे हमसब देखलहुँ छ,
और 11 6 और 11 पर यतिक प्रयोग छल, लेकिन एहिमे 10 और 7 पर यतिक प्रयोग कयल जाइत अछि। लेकिन दुनूमे की अछि 17टा आ 17टा के वर्णक प्रयोग कयल जाइत अछि। शिखरनी छंद में आ मंदा क्रांता छंद में वर्ण के प्रयोग समान रहत, लेकिन यतिक प्रयोग में अंतर अछि। 10 और 7 पर 10 एवं 7 वर्ण पर यतिक प्रयोग कयल जाइत अछि मध्यक्रांता छंद में। मध्यक्रांता छंदक हमसब देखब गण विन्यास। मध्यक्रांता छंदक गण विन्यास भऽ जाइत अछि मभ नतात गागा। मभ माने म से भऽ गेल मगन, भ से भऽ गेल भगन, ठीक। नतात में आबि जाइत छी, न से भऽ गेल नगन, त से तगन, फिर त से तगन, आ गागा से भऽ गेल एकटा दूटा गुरु लास्ट में, गुरु गुरु। एहि तरह गण विन्यास मध्यक्रांता छंदक गण विन्यास जे पूछत तऽ हमसब मारि सकै छी मगन, भगन, नगन, तगन, तगन, गुरु गुरु। इहोमे जे अछि मगन, भगन, नगन, तगन, तगन, दूटा गुरु। शॉर्टकट में तैं के बिठा लेलहुँ जे मभ नतात गागा, मभ नतात गागा, एना कऽ के याद रख सकै छी। एक गण विन्यास क्रमशः कारण एक याद रखब आवश्यक अछि जे क्रमशः अहिना प्रयोग हैत प्रत्येक चरण में। मध्यक्रांता छंदक प्रत्येक चरण में क्रमशः गण विन्यास अहिना होइ छै मभ नतात गागा, मगन, भगन, नगन, तगन, तगन, आ दूटा गुरु। मगन, मगन के लेल गण विन्यास होइत अछि जाहिमे सब गुरु के प्रयोग कयल जाइत अछि। जेना हमसब या माता राजभानस लगा में पढ़ने छलहुँ, तो ओहि तरह हमसब अगर यदि ई नहियो याद रहत ओहि समय में, तो या माता राजभानस लगा कऽ बैठा के बना सकै छी। ताहिके बाद हो गेल भगन। भगन के लेल होइत अछि पहिल गुरु, दूटा लघु। नगन के लेल तीनू के तीनू में लघु प्रयोग कयल जाइत अछि। तगन में दूटा गुरु, अंतिम लघु। फेर तगन में मध्यक्रांता छंद में 2 बेर तगन अबैत अछि। तगन के लेल भऽ गेल दूटा गुरु, एकटा लघु। फिर एहिके बाद सबसे अंतिम में 17 गो केना पूरत तऽ 5टा गण भऽ गेल, तऽ 5टा गण के 5 तिया 15टा ई भऽ गेल वर्ण, आ दूटा लास्ट में गुरु के प्रयोग कयल जाइत अछि। एहि तरह मध्यक्रांता छंद में कुल 17 वर्णक प्रयोग होइत अछि, आ 17टा वर्ण जे अछि ताहिमे 5टा गण के अछि तऽ 5 तिया 15, आ दूटा गुरु के लास्ट में प्रयोग होइत अछि। तऽ ई भऽ गेल मध्यक्रांता छंदक गण विन्यास। मध्यक्रांता छंदक गण विन्यास में इहो देख सकै छी मगन के लेल, मगन के लेल, फिर हो गेल भगन के लेल, फिर नगन के लेल, सबटा लघु। तगन के लेल, फिर तगन के लेल, और लास्ट में दूटा के गुरु के प्रयोग कयल गेल अछि। ई तरह एके गण विन्यास कयल जाइत अछि। मध्यक्रांता छंदक उदाहरण देखब हमसब। मध्यक्रांता छंदक उदाहरण बहुत नीक अछि, चंदा झा द्वारा लिखल रामायण के अछि। जखन लंका के अंगद पहुँचे लंका में, तखन जे सब डरायल रहैत अछि जे फेर से एगो बानर आबि गेलो, पहिल पूर्व तऽ हनुमान जी जरा के आले रहै छनि लंका। जब फेर पहुँचैत अछि तखुनका घड़ी के दृश्य अछि से देखू। कहने अछि एहिमे 4टा चरण अछि, आ चारू चरण में गण विन्यास अहिना जेना हमसब देखलहुँ तहिना रहत। मभ नतात गागा। देखियौ कीरे कीरे कह की झट दे, मुँह किया सुखेलो। कीरे कीरे में देखियौ दीर्घी का हर्षिकार छै,
तऽ गुरु भऽ गेलै, र एकार छै तऽ गुरु भऽ गेलै। फेर कीड़े कीड़ेके रिपीटेशन अछि तऽ इहोमे इएहके रिपीटेशन फेर कयल गेल अछि। कह क ह मे अ दुनूमे छै तऽ दुनू भऽ गेल लघु। फेर हर्षिकारके लेल लघुके प्रयोग होइत अछि, कारण जे झट जे अछि संयुक्त वर्ण नहि अछि, झट दें तऽ झ आ ट दुनू जे अछि लघु भऽ गेल तऽ लघु। दे द एकारके लेल गुरु। महर्षुकार मुँहमे उ देखियौ ई जे अछि दुर्घ उके प्रयोग कयल गेल छै, दुर्घ उके लेल गुरु, ह के लेल लघु। फेर क दीर्घी भऽ गेल अछि ओहिमे तऽ क के लेल गुरु, आ ए जे अछि सेहो ठाम गुरु अछि। सुखेलो सहर्षुकार अछि तऽ लघु, ख एकार अछि गुरु, ल उकार अछि तऽ गुरु। तिहोमे जहिना हमसभ एखन पढ़लहुँ गण विन्यास तहिना सेम अछि, देख लै छी हमसभ एक बेर। एहिमे देखियौ देल अछि जे प्रयोग मगन तऽ मगनके लेल अछि तीनू गुरु, तऽ इहोमे तीनू गुरु अछि। फेर भऽ गेल भगन दोसर, भगनके लेल अछि पहिल गुरु आ दूटा लघु, तऽ दूटा एक गुरु आ ई दुनू लघु। फेर नगन तीनू के तीनू लघु, तऽ इहोमे देखियौ तीनू के तीनू लघु। फिर तगनके लेल दूटा गुरु एकटा लघु, दूटा गुरु एकटा लघु छै। फेर तगन छै रिपीटेशन तऽ दूटा गुरु एकटा लघु। तहिना छै बादमे दूटाके गुरु छै, तऽ इहोमे दूटा गुरु छै। गण विन्यास जहिना हमसभ देखलहुँ तहिना इहोमे अछि, आ हरेक पंक्तिमे हरेक चरणमे एहिना गण विन्यास कयल गेल अछि। जेना दोसरेके देखलियै बीरे बीरे बहुत जन छी, त्रास की भेलो, की हेतु भेलो, तऽ बीरे बीरे तऽ हर्षिकार र एकार तऽ दुनू गुरु अछि, तऽ गुरुके प्रयोग कयल गेल छै। इहोमे गुरु अछि दुनू, तऽ गुरु। बहुतमे तीनू लघु अछि। अरसुकार अछि तऽ लघु, ब अ उच्चारणमे अबैत अछि लघु, त अ उच्चारणमे अबैत अछि तऽ लघु। जनमे ज आ न जन दुनू अछि लघु। छीमे छ हर्षिकार नहि अछि, दीर्घिकार अछि, तऽ दीर्घिकारके लेल गुरु भऽ जाइत अछि। फेर त्रमे आकार अछि, ताहिमे भऽ गेल गुरु, आ स अ के उच्चारणमे लघु। क मे दीर्घिकार अछि तऽ गुरु, ह एकार अछि तऽ गुरु, आ फेर त भऽ गेल हेतुमे हर्षु तऽ लघु। भ एकार गुरु, ल उकार गुरु। गणो विन्यास हमसभ देखब, इहोमे जहिना एहिमे गण विन्यास प्रयोग कयल गेल अछि, आ इहोमे जहिना प्रयोग भेल अछि तहिना मात्र इहोमे तहिना सेम अछि। लास्ट दुनू गुरुके लेल शुरूमे पहिल अछि मगन तीनू आबि जाइत अछि। एहिमे एकटा गणके लेल आ दूटा ई गण, तीनटा गण भऽ गेल मगनके लेल गुरु गुरु गुरु। भगनके लेल गुरु आ फेर दूटा लघु, तऽ एहिमे से एकटा लघुके निकालब, एहिमे से दूटा गण ई के लेल तऽ गुरु लघु लघु। फेर नगनके लेल एकटा एहिमे भऽ गेल आ दूटा एहिमे भऽ गेल, तीनू ई मिलके भऽ गेल नगनके लेल। फेर तगनके लेल गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु आ लघु प्रयोग कयल गेल अछि। फेर तगन रिपीटेशन अछि तऽ गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघुके, आ लास्टमे दूटा गुरु प्रयोग कयल जाइत अछि, से भऽ गेल। तऽ एहि तरह गण विन्यास हमसभ देखलहुँ। शिखरनी इहोमे अछि, जहिना शिखरनीमे देखलहुँ तहिना मदक्रांता छन्दमे सेहो एहिना प्रयोग कयल जाइत अछि।
तैसे अगला चरण हम सब छंद के अगला वीडियो में देखम जे शार्दुल विकृतिक छंदक के मगन सगन के प्रयोग देखब। ताबे एक रह दै छियै एतबे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपने RS मैथिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब जरूर कर ली, जिससे कोनो वीडियो मिस नहीं हुआ। लाइक